barrister Hamna Zain, and today we are going to talk about the different practice areas of law that you can actually avail after your law degree. Whether you are an aspiring lawyer or you are a law graduate, or whether you're in school and you're thinking of doing law, so there are 11 different kind of opportunities that you actually can avail after doing your law degree. So first of all, सबसे जो मैं पहली option आपके पास है वो ये है कि you become a litigator. So a lot of people I know have given their US state bar. For example, there are a lot of New York attorneys who in America who actually come back to Pakistan, जिन्होंने New York bar दिया हुआ होता है, California bar दिया होता है. So there are different kind of bars for different states if you are doing that in America. So आप when you come back to Pakistan, आपकी market value उस तरह बहुत बढ़ जाती है कि आपकी salary, आपकी job opportunities, and then obviously you are have way more exposure and have way more training than compared to just a LLB graduate. So जो second है ये तो हो गई post graduation. Now जो सबसे main जो second आपके पास opportunity है वो ये है कि you become a litigator. So that's a most common one. A lot of people after the LLB they go into litigation. Litigation में आप जा सकते हैं किसी law firm के through, you join a recognized law firm और उसमें आप अपने सीनियर के साथ एज एसोसिएट काम करें और आप सीखें different practice areas. For example, there's civil, there's criminal, there's family, there's corporate. So there are different kind of areas you practice and you actually understand कि आप किस में फ्यूचर में जाना चाहते हैं. So वो आपके लिए एक बहुत बेस्ट ऑप्शन होती है initially after your LLB, because उसमें आपके पास different experiences, different exposures, different practice areas आ जाते हैं. Secondly, you become a corporate lawyer just like me. So I'm a corporate lawyer. I've been working for the past 11 years as a corporate lawyer. Corporate law join करने के लिए आपके पास दो different kinds of ways है. Number one, you join a law firm. Again आप कहेंगे कि उसमें और litigation में क्या फ़र्क है. आप law firm में काम करें, litigation ना करें, सिर्फ corporate law करें. So आप एक specialized law firm join करें, या फिर जो भी law firms होती हैं उनके पास corporate law की एक अलग speciality होती है, काम होता है, clients आते हैं जो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स होते हैं. आप कॉर्पोरेट का काम करें, कॉर्पोरेट का काम सीखें और वहां से जब आप इतना सीख लें तो आप अपनी आइदर प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू कर दें एज अ कॉर्पोरेट लॉयर, या फिर आप कोई कंपनी ज्वाइन कर लें. दूसरा तरीका कॉर्पोरेट लॉ करने का वो ये है कि आप you directly join a company. So directly joining a company means that you join a multinational company. For example, I'm working at Wateen Telecom as a senior legal counsel. You become a legal counsel, legal executive, senior legal counsel, head of legal, general counsel. So globally, every company in the world, including of course Pakistan, has different kinds of they have a different they have legal department in their organization. So legal department का मतलब ये है कि कंपनी की जो कंपनी आपके क्लाइंट होती है, लीगल डिपार्टमेंट में लॉयर होता है. कंपनी जो है आप कंपनी को एडवाइस करते हो, कंपनी इज योर ओनली क्लाइंट, यू एडवाइज योर कंपनी, यू मिनिमाइज द रिस्क. आपका काम ये होता है. लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली आस्क मी दिस क्वेश्चन कि व्हाट इज द वर्क फॉर ऑफ अ लीगल काउंसिल. लीगल काउंसिल इज यूजुअली ड्राफ्टिंग, negotiating and vetting, reviewing agreements of the company. So they are advising the sales department, the marketing department, the finance department. So if for example you're in a telecom company or you're in a company for example which is manufacturing प्रोडक्ट्स, बेवरेजेस वगैरह, सो कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी है जो कोई प्रोडक्ट बना रही है, सो हर कंपनी की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको बहुत अच्छी समझनी है. आपने कंपनी की बिजनेस एरियाज़ के, फॉर एग्जांपल टेलीकॉम कंपनी करती क्या है, उसकी कमर्शियली ट्रांजैक्शंस क्या हैं, रेवेन्यू कैसे बनाती है, वो सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है. एंड देन यू विल बी इन अ पोजिशन टू एक्चुअली हेल्प द कंपनी मिनिमाइज द रिस्क. तो आप उसको हाईलाइट करते हैं एग्रीमेंट्स के अंदर, निगोसिएशन डील्स के अंदर. मोस्टली आप देखें कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगोशिएशन हो रही होती हैं वो लॉयर्स करते हैं. कंपनीज के लॉयर टू लॉयर, वन कंपनी टू अनदर कंपनी, टू लॉयर्स के बीच में एक एग्रीमेंट्स चल रहे होते हैं और उसमें रिस्क इवैल्यूएशन होती है कि अगर आपकी कंपनी कस्टमर है और या आपकी कंपनी सप्लायर वेंडर है तो उसके हिसाब से क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या 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 रिस्क हो सकते हैं, उनको आप कैसे मिनिमाइज कर सकते हो. सो हाउ यू गोइंग टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ योर कंपनी. यू बेसिकली हेल्प योर कंपनी डू दैट. सो कंपनी इज योर ओनली क्लाइंट. नाउ आई विल मेक अनदर वीडियो जहाँ पे
आप बता सकते हैं कि क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं. सो वर्सेस इन हाउस वर्सेस लिटिगेशन. सो मैं अभी आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि अगर आप इन हाउस काउंसिल बनते हैं उसमें आवर्स आर लेस, इट्स लेस कंपेरेटिव, इट्स नॉट दैट स्ट्रेसफुल. इसके अंदर आपके आवर्स कम होते हैं. लिटिगेशन में देयर मोर आवर्स बिकॉज यू गोइंग इन कोर्ट, you are doing more work. You're not doing one kind of work, you're doing multiple various kind of work. There's a lot of learning. But if you are stable in your if you are of a certain age and you prefer being not too flexible and you want a particular kind of job and with fixed hours and with a fixed pay, so you can go ahead and choose being a corporate lawyer, in-house lawyer. in-house lawyer की initially salaries बहुत ज़्यादा होती हैं compared to litigation. litigation में salaries बहुत कम होती हैं. पाकिस्तान में तो 10 या 20 हज़ार रुपए की आपकी स्टार्टिंग रेट होती है एज अ लॉ फर्म. बड़ी कंपनी में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो यू ज्वाइन फ्रॉम 80,000 to 1 lakh rupees डिपेंडिंग ऑन विच सिटी एंड विच कंट्री यू आर, सॉरी विच सिटी एंड विच कंपनी यू आर. उसके अलावा आपके पास फोर्थ ऑप्शन है यू डू प्राइवेट प्रैक्टिस. तो आपने इतना ज़्यादा सीख लिया लॉ अपने लॉ फर्म में काम करते करते कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस में जाते हैं. प्राइवेट प्रैक्टिस में आप सिविल काम कर सकते हैं, क्रिमिनल कर सकते हैं, फैमिली कर सकते हैं, टैक्स कर सकते हैं. सो देयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉ दैट यू थिंक यू स्पेशलाइज इन, यू कैन डू दैट. नाउ नंबर 5 इज जो कि इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा, वो है CSS. सो CSS, a lot of people I know after the LLB have done their CSS. CSS and law is a very great combination because आपको अवेयरनेस होती है. आप एज आप गवर्नमेंट ऑफिसर बनते हो, 17 to 18 ग्रेड में स्टार्टिंग होती है. यू नो अबाउट द लॉ एंड देन यू ऑल्सो यू आर वेल वर्स्ड ऑफ व्हाट योर कंट्रीज लॉ इज एंड देन यू बिकम अ पब्लिक ऑफिसर. सो उसमें आपकी यूटिलाइजेशन ऑफ द डिग्री इज क्वाइट अ लॉट कंपेयर टू इफ यू आर डूइंग सम अदर डिग्री. सो लॉ एंड CSS आई हैव ग्रेट कॉम्बिनेशन. इफ यू लिविंग इन पाकिस्तान आई वुड प्रेफर कि CSS करना इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस, वन ऑफ द बेस्ट. नाउ number 6 is that you go into judiciary. So judiciary again is just like CSS का एक competitive exam होता है, judiciary का भी competitive exam होता है. आप 2 years license लेने के बाद, LLB के बाद आप अपना license लेते हो law GAT के through. law GAT के बाद आप जुडिशरी का एक एग्जाम देते हो, लेकिन उस एग्जाम में सिविल जज का जो एग्जाम होता है, 2 तरह के जुडिशरी के एग्जाम होते हैं. एक सिविल जज एग्जाम होता है, एडिशनल सेशन डिस्ट्रिक्ट जज होता है. सिविल जज के लिए आपको मिनिमम 2 साल का टाइम पीरियड चाहिए. दैट मीन्स आफ्टर योर LLB you start, once you have done your LLB you give your you get your license law GAT एग्जाम के बाद अपना लाइसेंस लो. उस डेट से स्टार्टिंग फ्रॉम दैट डेट 2 years you need at least to be eligible to sit for civil judge exam. civil judge में जब आप पास हो जाओगे तो you will be a 18th grade officer, civil judge, you will be civil judge. It's a 18th grade position, it's a very good position. However, the chances of getting promoted would be a little bit slow compared to, then there is another option जो कि ये एडिशनल सेशन जज. आप अपने लॉ करें. पंजाब में हर सूबे में डिफरेंट सालों की एक डिफरेंट ईयर्स रिक्वायरमेंट है. इन पंजाब देर इज 10 years after your license, after your LLB you get your license. from your license 10 years practice, 10 years की मिनिमम आपने कॉर्पोरेट या लिटिगेशन की प्रैक्टिस चाहिए होती है. और उसका भी एग्जाम इक्वली सिविल जज जैसा ही होता है, स्लाइटली मुश्किल होता है. सिविल एडिशनल सेशन जज के लिए आप 20 ग्रेड पोजीशन में होते हो, और 20 ग्रेड पोजीशन का मतलब ये हुआ कि आपने 8 साल के अंदर अंदर इफ यू परफॉर्मिंग वेरी वेल यू बिकम अ सेशन जज विच इज 21 ग्रेड एंड देन उसके एग्जैक्ट 2 years बाद आप एक हाई कोर्ट तक पहुंच जाते हो. सो उसमें आपकी प्रमोशन और हाई कोर्ट में जाने का चांस बहुत ज़्यादा होता है. एंड देन ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट एंड देन चीफ जस्टिस. सो दैट वो सीनियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है. एंड दैट्स द बेस्ट डील इफ यू फॉर एग्जाम्पल वॉन्ट टू वेट इट आउट 10 years. अच्छा, ये जो सिविल जज और एडिशनल सेशन जज के एग्जाम्स होते हैं ये बहुत हाईली कंपेरेटिव होते हैं. इनकी वैकेंसीज भी एडिशनल सेशन की कम खुलती हैं. सो इसके लिए आपको मिनिमम 2 साल की तैयारी की ज़रूरत होती है. ऐसा नहीं होता कि आपने ओपनिंग आई है और आप फ़ौरन जाके सिविल जज और एडिशनल का एग्जाम दे देते हो. नो, यू हैव टू स्टडी फॉर 2 years मिनिमम. दे आर वेरी डिफिकल्ट. इट्स एक्चुअली टफर देन CSS. नाउ 7th ऑप्शन
after your law degree is that you become do your masters in finance. बहुत सारे लोग I know they do their MBA in finance, and to be honest it's a great combination again if you are joining a company. So आप MBA करो finance और आप law किसी की law कंपनी के law department में आप join करते हो, तो आपके लिए वो एक best combination इसलिए होती है because a lot of companies internationally as well prefer lawyers who have a finance background or sales background, because they can understand the company's commercial transactions really well compared to obviously somebody who is a pure lawyer background. Number 8 option is that you become an arbitrator or you become a mediator. Arbitration और mediation के भी courses होते हैं जो कि आप कर सकते हैं, और आप वो साथ साथ part time अपनी practice के साथ ये भी कर सकते हैं. Number 9 is you become a legal researcher, or you become a publisher, or you write articles, you become an editor. So law related articles अखबारों में भी छपते हैं, और बहुत सारी forums हैं अब पाकिस्तान में जो सिर्फ और सिर्फ law related articles print करती है. So that is one of the things, if you are more into writing, if you more into research, you can do that. Now number 10th option is teaching. माई मोस्ट फेवरेट एक्चुअली. आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस के साथ आप टीच कर सकते हो, या फिर आप परमानेंट टीचर बन सकते हो, फैकल्टी, परमानेंट फैकल्टी. सो टीचिंग में आपको अगर आपने लम्सडेस यूनिवर्सिटी में जाना है, यू नीड PhD, मास्टर्स और बार एट लॉ. दिस इज द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर यू टू बिकम अ प्रोफेसर. अदरवाइज असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हो मास्टर्स के साथ. टीचिंग बहुत सारे lawyers part time भी करते हैं अपनी practice के साथ, they teach as well. So that's also one of the most interesting options. If you are into academics, a lot of people I know are actually full time teaching, and also they have their private tuition centers, and they're giving tuitions at home, and they, trust me, they're earning more than normal practicing lawyer or इन हाउस काउंसिल. सो आप सबसे ज़्यादा आपके पैसे टीचिंग में हैं, डिपेंडिंग ऑन ऑब्वियसली योर इंटरेस्ट एंड ऑब्वियसली हाउ गुड यू आर इन योर फील्ड. आप टीचिंग में कितने अच्छे हो, डिपेंड दैट करता है. अच्छा, उसके बाद 11th ऑप्शन है दैट आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन जाओ. पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब जो कि एज अ लॉ ऑफिसर आप कर सकते हो. उसमें देखें बहुत सारे उसमें भी एग्जाम्स होते हैं. यू आर नॉट स्पेसिफिकली 18th ग्रेड ऑफिसर, बट आपके ग्रेड्स थोड़े कम होते हैं, लेकिन आप अगेन यू आर अ गवर्नमेंट बेस्ड, गवर्नमेंट आपकी बेस्ड पोजिशन होती है. गवर्नमेंट ऑफिसर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर एग्जाम्पल हैंडल करता है क्रिमिनल मैटर्स फॉर दे रिप्रेजेंट द स्टेट. स्टेट रिलेटेड मैटर्स वो हैंडल करता है. बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि वो LLB के बाद जो है वो लोकल एग्जाम्स दे दें, अपने जो गवर्नमेंट एग्जाम्स, जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो गया, लॉ ऑफिसर हो गया, लॉ क्लर्क हो गया. सो ये ऑप्शन है. एक और ऑप्शन जो मैं 11th ऑप्शन में बताना आपको मिस आउट कर गई, वो ये है कि a lot of people I know, and it's actually very good, they become law clerks. सुप्रीम कोर्ट के जजेस के वो क्लर्क्स बनते हैं, और वो इस्लामाबाद में उनकी होती है ऑफिस, एंड देन दे वर्क विद दोज सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड दे हेल्प देम वर्क ऑन द केसेस, रिसर्च ऑन द जजमेंट. सो वो भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन होती है. आई बिलीव वो 2 साल का पीरियड होता है या 1 ईयर का होता है, एंड उसके बाद भी आपकी लर्निंग इतनी हो जाती है कि उस क्लर्कशिप के बाद, सुप्रीम कोर्ट क्लर्कशिप के बाद, यू ज्वाइन लॉ फर्म और योर प्राइवेट प्रैक्टिस. सो देयर इज अ लॉट दैट यू कैन डू एज अ लॉयर. Now, my personal advice to all the law students or the young lawyers is that do not restrict yourself to just litigation, to just corporate law, just in-house counsel. No, you have a lot of options. Go ahead. आप जो है मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं, मल्टीपल एरियाज में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जो आपके इंटरेस्ट हैं. ये थिंग्स हैव चेंज, टाइम्स हैव चेंज. यू कैन डू अ लॉट. एक्चुअली आप सिर्फ प्रैक्टिस के अलावा भी आप अपनी प्रैक्टिस के साथ आप टीच भी कर सकते हैं. आप अपनी क्या कहते हैं, टीचिंग के साथ साथ आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस हो गई, आप एज अ लॉ ऑफिसर भी ज्वाइन कर सकते हो. वो फिर एक, इफ़ यू ज्वाइन एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर देन आप एक फुल टाइम गवर्नमेंट ऑफिसर हो गए. लेकिन देयर इज़ अ लॉट यू कैन डू. यू नो, आजकल आई नो अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग मी. एक्चुअली आई एम नॉट अ फ्रेश ग्रेड, सो मैं थोड़ी ओल्ड स्कूल हूँ, लेकिन आई हैव अ यूट्यूब चैनल. अ लॉट ऑफ पीपल आर रनिंग देयर ओन लॉ फर्म, दे हैव अ यूट्यूब चैनल, दे आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, दे आर ट्राइंग टू स्प्रेड अवेयरनेस through their channels. A lot of people are public speakers, they get that kind of opportunity, they come on television. So there is a lot you can do. There are so many things you can do. Law is not the same anymore. I think अब ये बहुत ज़्यादा
डाइवर्स हो चुका है और बहुत ज़्यादा एक्सपोजर भी लोगों को मिल गया है. सो आई बिलीव कि डू नॉट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ. एंड one more thing that a lot of people actually face when joining a company or a law firm is that उनका कोई experience नहीं होता, तो वो कहते हैं कि employers कहते हैं कि you come with experience. देखिए ऐसा नहीं होता, you have to start somewhere. ऐसा नहीं होता. We are not born lawyers, we are not born doctors, we are not born engineers. आपने कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी है. You either start as an intern or you start as an associate. You start somewhere, you start free of cost. When I started working as a lawyer, मैं फ्री में काम कर रही थी और मैंने एक बहुत वेल नोन लॉयर के साथ काम किया था. आई वॉज वर्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट. सो इट्स ओके. यू देर समवेयर दैट यू हैव टू स्टार्ट. डू नॉट रन आफ्टर मनी इन द वेरी बिगिनिंग. यू first gain some experience and then the world is your oyster. So that is it for today, and thank you very much.